Hello everyone, how are you all? Welcome back to your own channel Study with Alka Kandwal. So, as you already know that we are focusing on PGT Computer Science, TGT, NBAS, DSSB. We have that vacancy also on our list now, and also those children who are in grade 11 computer science. We are doing all the chapters sequentially, so it will definitely be a help to you all also. So if you are new to my channel, I am Alka Kandwal, and we are basically dealing with computer science. NCERT we will be covering, and then we will be first doing all the chapters of grade 11, then we will be doing grade 12, and we will also be focusing on the other important aspects like networking and all. And there is a playlist which is dedicated to all those candidates who are appearing for all the government exams, wherein computer section is a mandatory thing. आजकल computer सब में आ रहा है, तो उन लोगों के लिए भी वो फायदेमंद होगा. एक अलग से प्लेलिस्ट है जिसमें आप लोग बस जो इम्पोर्टेंट है फॉर योर ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम, बैंकिंग है, उत्तराखंड एसएससी है, फॉर योर PCS, all the exams where the computer is included. So for them, a dedicated playlist is there. So, and those who have not yet subscribed to the channel, so please make sure that you all are liking it, sharing it, and subscribing it, and motivating me so that I can continue with the classes. So let us start with today's session. Class 11th में जो हमने first है computer system overview कर लिया है, and then we have also completed the Boolean logic. We have also done the conversion, the number system, and the conversion from one number system to another. Today, let us get started with Python. So are you all ready? So yes, come on. Let us start the session and we will start with Python. So let us get started with Python. Yes. So getting started with Python. Getting started with Python. So now we already know that Python is a very popular language, is it not? It is the second most popular language after JavaScript. Do you know that? So yes, Python. Now when we are talking about Python, Python किसने बनाया, किसने develop किया Python programming language? So Python को बनाया है हमारा Guido von Rossum. He was the person, Guido von Rossum, and in which year? February 1991. In this year, he has developed the language Python. So how did he get कि मुझे ये language का नाम Python रखना चाहिए? कहाँ से उनको एक idea आया? उन्होंने एक comedy circus देखी, comedy series थी Monty's Comedy Circus. That was the Flying Circus, Monty Python's Flying Circus. So from there he thought that okay, I will keep the name as Python. So that was the history behind it. अब जब हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, तो बहुत सारे एडवांटेजेस भी होंगे. दैट इज व्हाई इट इज सो पॉपुलर. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ पाइथन, so it is very, very easy to use. Easy to use because it is a very high level language. It is a very high level language, very high level language. And then we say that it is a interpreted language, and the syntax is very, very easy. जो सिंटैक्स है जिसमें हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं वो बहुत बहुत इजी है. सो इट बिकम्स वेरी इजी for the programmer to write the programs in Python because it's very high level language and it is a very easy syntax. It has a very easy syntax, so it becomes very, very easy to program in Python. Okay, now next we are saying that it is an interpreted language. Now do you remember जब हमने first chapter किया था तो हम लोग ने डिटेल में कंपाइलर के बारे में बात किया था, इंटरप्रेटर के बारे में बात किया था. तो हमने बात किया था कि इंटरप्रेटर it is a software which converts a high level language to machine level language line by line. Do you remember? It does it line by line. So when we are talking about Python and we are saying that it is an interpreted language, so it becomes very easy to debug. Now, do you remember I told you that any error in the program is known as a bug, or
इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है तो इजी टू डिबग है, मतलब टू फाइंड द एरर इट बिकम्स वेरी इजी. ओके, सो दैट इज वन ऑफ द एडवांटेज. अब क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, फ्री है और ओपन सोर्स है. Okay, it is a free and open source language. So the Python language is free and with the source code. Source code के साथ free है इसलिए उसको open source बोल रहे हैं. And the next advantage is cross platform. Cross platform language है. Now when we are saying that it is a cross platform language, what do we mean? That it will work on all the system. तुम्हारे स्मार्टफोन में ऑपरेटिंग सिस्टम, either it be Linux, Unix, Windows, सारे इट इज वर्किंग प्रॉपरली अक्रॉस द प्लेटफॉर्म. ऐसा नहीं है कि ये इधर अच्छे से काम कर रहा है, व्हेन वी सी इट इन द smartphone it will not work properly. If we see in another Android it will show a different result, nothing like that. It is a cross platform language and it has a varied uses ranging from database से लेकर तुम्हारा गेम से लेकर website. So lots of users are there. That is why it is so popular. So these are the advantages of your Python. Now, when we move ahead and when we see that, what are are there any disadvantages? Are we saying that, okay, only there are advantages? Are there some disadvantages or not? So let us talk about it in detail. When we talk about the disadvantages, हमने क्या बोला कि Python क्या है? Interpreted language है. Yes, we know that it is an interpreted, so that is why it makes it a bit slow as compared to the other compiled languages. जैसे C है, C++ है, उससे थोड़ा सा slow है because interpreted language है, so line by line conversion is there. So yes, it is a bit slow. Okay, and the libraries, जब हम लोग इसके लाइब्रेरीज के बारे में बात करेंगे तो इट हैज लेस लाइब्रेरीज. ठीक है, इट हैज लेस लाइब्रेरीज एज कंपेयर्ड टू द लैंग्वेजेस लाइक सी, जावा, पर्ल. ये सबसे कम लाइब्रेरीज हैं इसमें. ओके, सो दैट इज वन ऑफ द disadvantages and it is not. अब आप लोगों को जो समझ में नहीं आएगा लेट मी नो. ठीक है, नॉट स्ट्रिक्ट ऑन टाइप बाइंडिंग. अब इसका मतलब है कि क्या है कि इट इज नॉट स्ट्रिक्ट ऑन टाइप बाइंडिंग. इसका मतलब ये है कि अगर हमने एक वेरिएबल एक डिफाइन किया जिसमें हमने बोला कि इसमें नंबर ही स्टोर होगा. ठीक है, एक वेरिएबल डिफाइन. अब नेक्स्ट सेक्शन में जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें वेरिएबल कीवर्ड्स हम लोग डिटेल में करेंगे. अभी आप इतना समझ लो कि अगर हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया जिसमें हमको बस नंबर सेव करना था. ओके, वी जस्ट वांटेड टू सेव नंबर्स इन दैट वेरिएबल, बट अगर हमने उसमें नेम भी स्टोर कर दिया, कोई कैरेक्टर भी स्टोर कर दिया, पाइथन इज ऑल ओके विद इट. पाइथन विल नॉट रिपोर्ट एनी एरर ओनली. वो नहीं बोलेगा कि इसमें बस नंबर्स अलाउड है, इसमें बस कैरेक्टर्स अलाउड है. इट इज ओके विद इट. सो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम. सो दैट इज नॉट स्ट्रिक्ट ऑन टाइप बाइंडिंग. Okay, and then because it does not have a strong syntax. Do you agree? It does not have a strong syntax. तो फिर क्या होता है, अगर हमने एक प्रोग्राम लिखा पाइथन में, अब हमको उसको कन्वर्ट करना है किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, सो इट बिकम्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क बिकॉज दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का तो एक प्रॉपर सिंटैक्स है, but Python is not having a proper syntax, so it becomes very difficult as a programmer कि जब हमने पाइथन सीख ली, अब हमको उसी को दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है एक पर्टिकुलर प्रोग्राम, then it becomes a very tough task. Okay, so these are the Python advantages. ये हैं. disadvantages क्या हैं? उसके बाद you can just, it is because free and open source, you can easily what you can do, download it and then you can start working on it. जब हम लोग पाइथन में काम करने लगते हैं तो उसमें दो मोड हैं. ओके, देयर आर टू मोड्स वी विल बी टॉकिंग अबाउट. वन इज योर इंटरैक्टिव मोड, इंटरैक्टिव, और द इमीडिएट मोड, एंड देन द अदर इज द स्क्रिप्ट मोड. दूसरा क्या है? स्क्रिप्ट मोड. ओके चिल्ड्रन, so now when we talk about the interactive mode, अब interactive mode क्या होता है? जैसे कि जब भी हमने पाइथन आईडीएलई को ओपन किया तो क्या होगा, उसमें ऐसा आता है कमांड प्रॉम्प्ट. इसको बोलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट. अब जैसे इसके आगे हमने लिख दिया
5 + 2, आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा 7। फिर से कमांड प्रॉम्प्ट आया, उसमें मैंने लिखा 7 + 7 - 6, so output will come 1. So we are giving the input and we are getting the output instantly. जैसे इनपुट किया उसका आउटपुट ये है, ये इनपुट किया इसका आउटपुट ये है, तो हमको then and there we are getting the result. So it is giving input and getting the output instantly. But for checking the output it's okay. मगर अगर हमको सेव करना है, कोई बड़ा प्रोग्राम है, तो इंटरैक्टिव मोड इज नॉट ओके देन फाइन. जो छोटा प्रोग्राम है, instantly we want to check the result, then it is fine. Now when we talk about the script mode, whenever we have a program और एक बड़ा प्रोग्राम है, हम चाहते हैं कि वो सेव हो and at a later time also we can access it, so we will have to use the script mode. We will go to file and then we will go to new and then we will write the code there, type the code there. Okay, and then you will save the code, give any name. For example, you have written a program to calculate the sum, write the name and it will be saved with the extension of .py. Okay, and then you can run the program and you will get the output in the console. Fine. So there are two modes, interactive or the immediate mode and script mode for saving the programs. तो सेविंग के लिए बहुत जरूरी है कि हम स्क्रिप्ट मोड में काम करें. Fine. So that is about your script mode. So this is about getting started with Python. Tomorrow we will be meeting and then we will be discussing about keywords, literals, what are the strings. Now, for example, if I ask you that Python accepts strings, what are strings? Collection of characters are known as the string. So the syntax and everything we'll be discussing in the next class. So I hope you understood everything, starting from how did it start, from the Monty Python's flying circus to what are the advantages, what are the disadvantages. So this was a brief introduction about the Python programming language, and stay tuned. So आप लोग बने रहे and then we will be discussing lots and lots of interesting things, and I think that you are definitely gonna enjoy the journey of Python. And so let's rock it together. So if you have not yet subscribed, so it's just a reminder to make sure you are liking it, sharing it, subscribing it, and making sure that you are clicking on the bell notification so that as soon as the video is uploaded, you all are notified with it. So all of you have a great day and we will be meeting tomorrow. Thank you, everyone.